Welcome to all of you, Vanik Smart Class. So today we'll discuss regarding police SI questions of similar type of questions. Say series re. So few questions again for police SI, similar type of questions. Let us discuss the questions. See the first question first. The price of sugar is increased by 17%. A person wants to increase the expenditure by 5% only. By approximately, what should be decrease his consumption? Decrease consumption. तो हम यूज करें सक्सेसिव. तो सक्सेसिव लॉजिक गला प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर. तो प्राइस इंक्रीज बाय 17%. 100 थिला बतन 117 हो गला. एंड ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 5%. कंजप्शन पचारची. सो एक्सपेंडिचर 5% increase. That means 100 is to 105. Increase is expenditure by 5% only. By approximately, what should be the decrease in consumption? The consumption कौन होगा? Division है जीवो. 100 by 100 that is 1 ratio 105 by 170. तो cross multiplication 170 is to 105. So decrease is 170 ରୁ 105 डिक्रीज ହେଇଛି. That's why decrease ହେଲା 12. So decrease percentage equal to 12 by 117 into 100. Approx 3 कर दिया को 3 3 9 3 9 27 3 4 12. तो 400 by 39 39 1 जार 39 10 डेसिमल 100. So 39 पाखापाखि 3 आसी. So 10.3%. So option is first option. तो XY concept नहीं करी परिबा मतलब सक्सेसिव लगे परिबा. तो दिस विल बी मोर इफेक्टिव हबो. तुम प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर दिया हिची, प्राइस दिया हिची, कंजप्शन पचारची. सो डिवीजन कर दबो. यू कैन गेट द आंसर. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. An article is sold for rupees 288 after successive discounts of 25% and X%. If the mark price of the article is rupees 480, so what is the value of X? तो ये भी सक्सेसिव ही परिबो. देखो an article is sold for rupees 288, selling price is given 288. Successive discount दिया है 25% X%, but mark price is given 480. ताले 480 रु 2 successive discount दिया गला. तो प्रथम ही 25% 25% जे 1/4 4 थिला बतन 3 हे गला. सेकंड डिस्काउंट 2% हाउ मच केते थिला केते हला. सो दैट मार्क प्राइस थिला 480 एंड सेलिंग प्राइस हला 288. रिडक्शन करि परिबा को. फर्स्ट रिड्यूस तो 4 कट जाउ. फर्स्ट 4 कट 1248 1248 4 कट 28 8 अगेन 24 से कटिबो 24 50 120 24 30 72. तो 5 is to 3 रेशियो करो. एटा ला 5 by 4 एटा ला 3 by 3 1. तो रेशियो इज 5 is to 4. So second discount is 1 by 5. So discount 2%, 1 by 5, that is equal to 20%. That's the answer is coming first option again. X is what percent? Second question number 3.
The greatest number that will divide 1935 and 59 to leave the same remainder in each case. Question from HCF. So you can find this answer of this greatest number that will divide 1935 59. So simple answer about difference or HCF. The answer is that is equal to HCF of difference of two numbers 35 minus 19 and 59 minus 35. So that is equal to HCF of 15 नगले 6 2 11 116 9 minus 5 वाला 4 and 5 minus 2 24. So HCF of 16 and 24 is 8. The answer is coming fourth option D. The greatest number that will divide these three numbers so that each case remainder each. The remainder question पचारे what is the remainder? तो 8 divide कर each number 8 ने 16 तो each remainder होगा that is 3. तो remainder 3 होगा and greatest number is equal to 8. So this is the question from HCF. Next question, question number 4. X value दिया if x equal to 1 by 12 into 13. So into it, not point, that's of into 12 into 13, 13 into 14, 14 into 15. So like this, 23 into 24. Similarly, it is y. Y equal to 36 into 37, 37 into 38, like this, up to 71, 72. Then x by y pacharchi. So find the value of x, find the value of y, then divide. That is x by y. So first x value back kariba, very short calculation kari pariba. So x is equal to 1 by 12 minus 1 by 24. Like very 12 into 24 by 12, 24 minus 12. ये जो 12 बार बार कटि जीवो तो दैट इज इक्वल टू 1 by 24. तो ये हला x बहुत सिंपल कैलकुलेशन करि परिबा. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली y 1 by 36 and last number is 1 by 72. So that is equal to 72 minus 36 by 72 into 36. तो ये जो 36 तो 36 cancel. This is 1 by 72. तो x by y पचरची तो x by y equal to 1 by 24 into 72 by 1. So these 3 are, the answer is coming 3. So right answer is coming, option D is the answer. Very short calculation. So concept is not required. Very shortly you can get the answer. So the concept karibo again time takes. So step को minimize kariba and you can question get directly. Next question number 5. Read the question first, question number 5. A farmer divides his herd of n cows among his 4 sons so that the first son gets 1/2 the herd, the second 1/4 of the herd, the third son 1/5 of the herd, and fourth son receives 7 cows. Then what is the value of n? Ratio proportion. तो फर्स्ट सन पाउची हाफ ऑफ द हार्ट, हाफ ऑफ द हार्ट. सेकेंड इज 1/4. थर्ड इज 1/5 and fourth son is getting exactly 7 cows. ताले what is the number of n? Total number of cows. ताले LCM नहीं जाओ उठे 5 4 या 2 रे LCM नहीं जाओ 5 20 नहीं जाओ 20 तो 40 नहीं जाओ बेटर आवा. Let 40 part नहीं जाओ. Let 40 part is the value of n. ताले first son कितने पहला 1 by 2 into 40 that is equal to 20 part. Second son पाइबो 1 by 4 into 40 that is equal to 10 part.
and third son पाइबो 1/5 into 40 that is 8 part. तो सम केते गला 20 10 30 and 38 ताले फोर्थ सन पाइबो निशन 2 part remaining. तो फर्स्ट सन पहला 20 पार्ट, सेकंड सन पहला 10 पार्ट, थर्ड सन 8 पार्ट. हम यदि 1 पार्ट वैल्यू पाई जिबा देन रेस्पेक्टिव नंबर पाई जिबा सो व्हाट इज द ए मध्य पाई जिबा. तो ताल 2 पार्ट वैल्यू यदि 7 पचारि जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n तो 40 पार्ट केते. तो 2 पार्ट यदि हला 7 ताले 40 पार्ट 20 गुना अब 20 रे मल्टीप्लाई कर दियो. आंसर इज 140 is the right answer. That's option D is the answer. Next question जो है question number 6. Cubes, fraction ratio, fractions and that is decimals. Fractions and decimals. 0.05 square plus 0.41 square plus 0.073 square by 0.005 square. हम देखु जे नंबर समान अछि बट एटी गोटे डेसिमल अधिक अछि, एटी गोटे डेसिमल अधिक अछि, ओ डेसिमल अधिक अछि. लाइक सेही नंबर कन्वर्ट कर दियो देन कैंसिल कर दो. सो दैट कैन रिटन एज 0.05 रो स्क्वायर प्लस 0.41 रो स्क्वायर प्लस 0.073 रो स्क्वायर बाय आको लगी पारिबी 0.05 ए नंबर लिखि दोची बाय 10 टा डिवाइड कर दोची रो स्क्वायर प्लस 0.41 बाय 10 रो स्क्वायर प्लस 0.073 बाय 10 रो स्क्वायर. तो समस्त 1/10 रो स्क्वायर कॉमन नहीं परी 1/100 पूरा कटि जीवो ताले ये टर्म पूरा कटि जीवो पूरा होल टर्म इज कैंसिल ताले 1/100 तळ रहला उल्टी गला. सो दैट आंसर इज कमिंग 100. दैट्स ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन बी. सिंगल लाइन सॉल्यूशन करि परिबा. सो आंसर इज 100. ताकू से टर्म रे कन्वर्ट करो देन डिवाइड करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is from simple interest questions. First read the questions. In how many years will a sum of money doubles itself at 6 whole 1/4% simple interest per annum? Rate percent दिया 6 whole 1/4%. In how many years will a sum of money double? Time पचरची जो टाइम फॉर्मूला हम जणा अछि हम टाइम फॉर्मूला लगै परिबा बट कन्वर्ट टू रेशियो कले कैलकुलेशंस बहुत कमिवो. तो 6 whole 1/4% को परसेंटेज कर दवा 1/16. 16 is the principal. जदि सम ऑफ मनी डबल्स ता माने प्रिंसिपल संग इंटरेस्ट समान हबो तार गोटे वर्ष जदि इंटरेस्ट 1 होची केते वर्ष 16 टंगा हबो ता 16 इयर्स रे. तो आंसर इज कमिंग 16 years. That's option is coming C. Without putting formula पकई परिबा टाइम इक्वल टू SI into 100 by P into R पकई परिबा और जे फार्मूला पकईबो टाइम इक्वल टू SI into 100 by P into R. But without putting formula सीधा रेशियो करि परिबा. तो 1/16 तो डबल हवा दरकार ताले प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट हवा दरकार. जदि गोटे वर्ष इंटरेस्ट टंगाटे होची ताले 16 वर्ष रे 16 टंगा हबो सो दैट डबल हबो. दैट्स व्हाई टाइम हला 16 years. So without putting formula you can get the answer. Next question jiba question number 8. तो बिना फॉर्मूला रे हम क्वेश्चंस करि परिबा. तो फॉर्मूला सब बडे यूटिलाइज सही परिबो न होबा बेटर हबो. तो हम जदी रेशियो मन रखिबा कांसेप्ट मन रखिबा कांसेप्ट रेशियो ताले उस क्वेश्चन इजीली करि परिबा देन द फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The difference between the compound interest
and simple interest for the amount 5000 2 years is 32, then find the rate of interest जेदा फॉर्मूला समस्त जणा अछि फॉर्मूला कहि परियो टाइम 2 इयर्स रे डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिले प्रिंसिपल देइछि तो 8% समस्त पाइजो बट हम आउट शॉर्ट रे कैलकुलेशन कर दे परियो तो शॉर्ट कैलकुलेशन कर दे परियो केमदी ना प्रिंसिपल रो 5000 रो हम जानते CI फॉर 2 इयर्स दैट इज इक्वल टू 2A plus B 2A है SI the difference of CI SI that is equal to B so CI minus SI so that is equal to B and कितने दिया है B टाको B दिया है 32 so difference of interest दिया है 32 principal दिया है B केंद्र पाइबा ना B equal to B equal to principal रो R% रो R% R% रो R% चल प्रिंसिपल दिया है 5000 तो 5000 रो R% रो R% that is equal to 32 दिया है ये ला सीधा आंसर so 5000 रो R% रो R% जदि 32 अछि ताले R% केता हो ताले 100 काटी दियो आउट 0 काटी दियो 5 काटी गले 2 तो R स्क्वायर जदि हला 64 ताले R equal to 8% that's why second option is the answer तो बहुत इजीली पाइबा अदरवाइज फार्मूला पकई परिबा फार्मूला ला प्रिंसिपल इक्वल टू CI minus SI into 100 रो स्क्वायर by R square R पचारची प्रिंसिपल दिया डिफरेंस दिया तो ये फार्मूला लगे परिबा बट सबटू बेस्ट हबो दैट इज प्रिंसिपल और R% दैट इज इक्वल B देन यू कैन फाइंड अदरवाइज आउट ट्रेडिशनल कांसेप्ट मते पकई परिबा तो ट्रेडिशनल अपेक्षा फार्मूला अपेक्षा बेस्ट हबो रेशियो फॉलो करो तो प्रिंसिपल रो R% दैट इज इक्वल B एंड यू कैन फाइंड द R%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Profit loss question. By selling 9 articles for a rupee, a man incurred a loss of 4%. To make a gain of 44%, the number of articles to be sold for a rupees. Concept करी परिबा questions, but concept अपेक्षा हम यदि short tricks use करिबा ताले calculation fast हबो. तो what is the short tricks of this? तो calculations रे हमें cost price भाग करिबा, then selling price भाग करिबा. Then that is number of articles पाई परिबा but again short tricks पकोजी तो short tricks of this will be जोटी number of rupee देइथिबो number of article and loss or profit percent देइथिबो तो हमें इन पकई परिबा that is ₹1 by quantity 1 into selling price 1 that is equal to ₹2 by quantity 2 into selling price 2 तो one type of ratio तो ये क्वेश्चंस को हमें हैंडल करबा में इजी हमें रेशियो नै परिबा ए रेशियो तार दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स हे परिबो ताले ₹1 माने कोन फर्स्ट रुपीज फॉर ए रुपी दिया इज दैट इज ₹1 इनकड ए लॉस ऑफ 4% तो सेलिंग प्राइस हे जिवो केते दैट इज लॉस ऑफ 4% 96% ऑफ सीपी तो सीपी रेशियो कन्वर्ट करो एंड क्वांटिटी देइछ 9 आर्टिकल्स एटा 9 देइछ to make a gain of 44% ताले एटा 144% of CP जो and number of articles to be sold quantity 2 पचरची for a rupee ये भी ₹1 देछ ये भी ₹1 sometimes rupee भी चेंज हुए तो जहां भी चेंज होबो एटा पकई परिया में पकई दो सीधा तो 1 by 9 into 96 that is equal to 1 by quantity 2 into 144 बहुत इजी होबो directly you can find the quantities so let us see what is the coming quantity 2 नौ रे काट दियो 16 1696 so quantity 2 equal to 6 that's why again option D is the answer quantity 6 तो अदरवाइज हमें कांसेप्ट रे करि परिबा सेलिंग प्राइस दियाइछि 9 आर्टिकल्स ₹1 कॉस्ट प्राइस पाइबा देन
loss 4% अच्छी तो cost price पाइबा, then to gain 44% selling price पाइबा, then you can find the number of articles. So calculation से भी अच्छी, so without calculations जब हमें tricks follow करिबा ताले calculation इजे हो, you can say it is the tricks. Next question is question number 10. Time and work questions. If 5 men or 7 women can earn 5250 per day, how much would 7 men and 13 women earn per day? So directly individual value दिया है और formula ଅଛି. That means 5 men be 5250 per day and 7 women also 5250 per day. How much would 7 men and माने plus and 13 women draw करिबे. तारे गोटे women बार men बार करी 7 men बार करिबा. Similarly 1 woman बार करी 13 women बार करी परिबे. ताले multiply करो. If 5 men पाउचंदी 5250 per day ताले 1 men पाइबो. सीधा कर दियो 7 men कर दियो. 7 men पाइबे. 5250 into 7 by 5. 5 से काटले 5 के 5 0 5 25 0 0 7 5 35 7 के 7. तो ये पाइबे that is 7 men. Similarly 13 women. So 13 women केते पाइबे? तो 7 women देइची. 7 women भी 5250 पाउचंदी. So 13 women पाइबे, that is equal to 5250 into 13 by 37. So that is equal to 7 रे कैंसिल करो 7 7 49 35 7 5 35 750 into 13 0 13 5 65 91 6 97. So total addition कर दबा. So that's why 7 men जदि 7350 पाइले and 13 women पाइले 9750 तो सम कर दियो. तो 7350 plus 9750 आंसर is coming 0 5 5 10 7 3 10 1 11 9 के 10 7 17 17,100. That's why fourth option is the answer, option D. So one student is writing, good morning sir, CGL apply होनी sir please कहंतु sir. CGL apply हबो साइड देखो साइड स्लो अछि साइड स्लो टे ट्राई करथाओ हेजबो कि असुविधा नै. नेक्स्ट क्वेश्चन CGL apply होनी सेम क्वेश्चंस. डिफरेंट कलर पेन यूज करंतु. ओके डिफरेंट कलर. ओके डिफरेंट कलर आ किछ नै परिबा देखो. Okay, yellow color देखिबा. Now it is yellow color. Right. Now let us see. Yellow color you will write because red color is not visible. I think some students are clearing it is. So let us see. Any other question students you can ask also. Very good. So up to 10. जदि कार किसी डाउट अच्छी ताले पचारि परिबो up to 10. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11. A is thrice as good a workman as B and takes 60 days less than B for doing a job. The time in which they can do it together is. So it is time and work questions. So we can do it very easy questions, efficiency based questions, single line solution, not more than one line required. So A is thrice as good a workman as B. So A by B ratio वाला 3:1.
not visible. I'm writing below. A by B, efficiency ratio 3:1, and days ratio will be inverse कर दिया 1/3. Now B takes 60 days less than B. A is thrice as good a workman as B and takes 60 days less than B. तो A नौची 60 days less than B, but part अनुसार 2 part. तो 2 part जदि हला 60, ताले 1 part equal to 30. ताले A नबो 30 days and B नबो 90 days. ताले जब together work करिवे, so how many days the work can be completed? तो work first भाग कर दियो, तो work का amount equal to जेकोन से गोटे वर्क भाग कर दियो 30 दिन काम करी जो 3टा काम करी ए 30 दिन नौची तो वर्क अमाउंट हम 30 × 3 ताकू ए प्लस बी करिवे तो ए प्लस बी रो एफिशिएंसी हला 4 इसे दवा बाय 4 डिवाइड कर दियो 2 रे कर दियो 2 2 जार 15 जार तो 45/2 सो दैट आंसर इज कमिंग 22 होल 1/2 days ये आंसर दैट्स ऑप्शन इज कमिंग सी. So find the work from efficiency, find the work, then find the number of days. Right. Next question, question number 12. From partnership. Read the question part. A and B are partners in a business. Can you solve this question? So let us see. It is also single line solution. Any person can give the answer quick. A and B are the partners in a business. A contributes 1/4 of the capital for 15 months and B received 2/3 profit. So find for how long B's money was used. Investment ratio दिया है and also profit ratio दिया है. Contributes 1/4 of the capital for 15 months and B received 2/3 of the profit. तो profit ratio दिया है and investment ratio दिया है. हम जानते profit by investment that is equal to time. जनों का time दिया है, you can find the time of others. Ratio बनाओ. तो A and B profit ratio. B received 2/3 of profit. 3 part जदि total profit हुए B पाउची 2 part. B जदि 2 part पाइबो A पाइबो 1 part. 2/3 of the profit. जो total profit हला 3 part. ताले out of 3 part B पाउची 2 part. तो remaining 1 part पाइबो that is A. Similarly investment ratio. A contributes 1/4 of the capital. जो total capital 4 part A invest करची 1 part. तो remaining 3 part invest करती वो B. तो ratio हला 1:3. तो ये हला invest profit ratio and respective investment ratio. ताले ratio करो. The profit ratio 1:2, investment ratio 1:3. ताले what is the ratio of time period? So time हम जानते हैं time equal to profit by investment. So profit ला 1/1 is 1. It is 2/3. Respective profit, respective investment ratio करो, then cross multiply करो. That is equal to 3:2. So time ratio जदि A and B रो 3:2. जनों का time period दिया है A रो time period ला 15 months and B रो time पचरची. So 3 part ला 15 months. 1 part is 5. So 2 part is 10 months. तो ऑप्शन इज कमिंग सी. तो रेशियो अगेन यूटिलाइज करिबा हमें. तो व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रेशियो, देन फाइंड रेस्पेक्टिव टाइम रेशियो. जन को टाइम इज गिवन यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Right. The ratio of income of A and B is 1:2 and that of their expenditures is 2:3. If 80% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of A and B? Savings ratio of A and B पचारची. The saving ratio A and B पचारची. दिया है कौन income ratio दिया है and expenditure से दिया है. So saving हम जान केंद्र बाहर है ना इनकम रू एक्सपेंडिचर माइनस कले हमें सेविंग पाइबा.
तो रेशियो 1 बनाओ तो फर्स्ट देइछि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी रो इनकम रेशियो that is 1:2 तो इनकम रेशियो दिया that is 1:2 and their expenditures also 2:3 expenditures 2:3 एटा x रचे एटा y रचे एबे 80% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर तो b रे एक्सपेंडिचर केते ना 3y आकु x नि करबी इट इज x इट इज y इट इज y तो रिलेशन देछि x to y 80% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर 80% माने 4/5 पहले कि दोजी इक्वल टू इनकम ऑफ ए 4/5 of 3y 80% of बीस एक्सपेंडिचर तो 4/5 of 3y is equal to income of a income वाला x ताले x by y रेशियो को बने दियो यदि 4/5 of 3y equal to x हला ताले x by y रेशियो इक्वल टू सेपट y नहीं जाओ तेपट कन हबो 12/5 तो ये हला रिलेशन फ्रॉम x to y x र वैल्यू 12 पकाओ 5 y र वैल्यू 5 पकाओ सेविंग पचारची माइनस करिबा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग ताले आकु आदरे मल्टीप्लाई कर केते ना 12 आदरे मल्टीप्लाई कर दैट इज 5 ताले इनकम रेशियो बतन के नहीं जो 12 के 12 12 दुने 24 एंड एक्सपेंडिचर कोन नहीं जो 5 दुने 10 एंड 5 3 15 तो रिस्पेक्टिव सेविंग रखो सेविंग माइनस कर दियो तो सेविंग रेशियो इक्वल टू 12 माइनस 10 हला 2 24 माइनस 15 हला दैट इज 9 तो रिस्पेक्टिव रेशियो हला 2:9 दैट्स व्हाई सेविंग रेशियो इज ऑप्शन बी 2:9 नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 The prize money of 1800 is divided among three students ABC such that 4 times the share of A is equal to 6 times the share of B which is equal to 3 times the share of C. Then what is the share of A? Again ratio proportion. तो 1800 टंका डिवाइड होबो रुपीज जाला 1800 among three persons in the ratio 3 students ABC such that 4 times the share of A 4A that is equal to 6 times of share of B 6B and that is equal to 3 times the share of C 3C. तो जदि यही टाइप रो क्वेश्चन अछि 4A equal to 6B equal to 3C तब ताको कंबाइंड रेशियो रे कन्वर्ट करो A is to B is to C कता बता ए बाई सीधा हमें करि परिबा बहुत वेज अछि तम A by B भाग करिवो B by C भाग करिवो देन A is to B is to C भाग करिवो देन एलसीएम नबो एलसीएम को डिवाइड करि मध्यम पाई परिबो बट सीधा अप्रोच जदि ए बी सी वैल्यू भाग कर चाहछो ताले ए को ब्लॉक कर दियो बी एंड सी की मल्टीप्लाई कर दियो 36 18 बी पाई की बी को ब्लॉक कर दियो ए एंड सी की मल्टीप्लाई करो 12 एंड सी पाई की सी की ब्लॉक कर दियो 6 into 4 ला 24 फर्दर रिडक्शन कर दियो 3 ने कटिवो एंड 6 रे कटि जाउ 36 18 6 दुने 12 6 4 24 येला लास्ट देन A, B, C पाइबे 3:2:4 रेशियो रे टोटल पाइबे 1800 देन फाइंड वन पार्ट पचारची कारो शेयर ऑफ A पचारची देन व्हाट इज द शेयर ऑफ A मिसे दियो 4 2 6 3 9 तो 9 पार्ट दिया जी 1800 तो वन पार्ट हला 200 तले A पाइबो 3 पार्ट 3 into 200 that is equal to rupees 600 let's say option is B less calculation so what less calculation through ratio proportion the answer is coming 600. Next question is question number 15.
Question number 15. Question number 15. Asuni. Some hang agala. ठीक है, मुझे बेटा कट दो, देख ली। So let us see question number 14.
The prize money of 1800 is divided among 3 students ABC. केता गला क्वेश्चन नंबर 15. A man walks a certain distance and rides back, taking a total time of 37 minutes. He could walk both ways in 55 minutes. How long would it take to ride both ways? Okay. The question कौन दिया? A man walks a certain distance and rides back, total time 37 minutes. ता माने walking plus riding 37 minutes. And he could walk both ways 55 minutes. Walking plus returning also walking. That is 55 minutes. And how long would it take to ride both ways? Riding plus riding. Man two riding projects. तो आम इक्वेशंस करी परिबा. So let us see what the short tricks for this. तो आम without any calculation मध्य करी परिबा. So let us see what the main tricks behind it. तो walking plus riding 37 minutes. यदि 2 walking 55 minutes, तो how much time more no first बार कर दियो. 2 walking रे how much time is more? 15 minus 7 is 8 and 4 minus 3 is 1. यदि 18 minute more नोची, तो 2 riding सेतिक minute less नबो. Then walking plus riding. So your answer should be 37 minus 18. That answer is coming 90. So option is coming C. So without any calculations हम करी परिबा बहुत short method रे. तो एटा मन रखो. यदि walking plus riding 37 minute, तो 2 walking रे जतिक टाइम अधिया नोची, 2 riding सेति टाइम कमी जीवो. तो कमी जमिन माइनस करता. 37 minus 18 that is equal to 19. Otherwise equation पकी करी परिबो. Walking plus riding 37, 2 walking 55, 1 walking पाइबो. फिर पकई दबो तो 1 riding पाइबो. Then minus करिबो. तो कैलकुलेशन को अवॉइड करि परिबा. सीधा आंसर इज कमिंग 19 minutes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. A man leaves from P at 6 a.m. and reaches Q at 2 p.m. on the same day. Another man leaves Q. So it is a distance between two places P and Q. तो जड़े 6 am रे बाहर चिठू and reach कला Q रे 2 pm रे. Second person starting from Q at 8 am and reach P at 3 pm. ताले at what time do they meet? Concept of relative speed. तो relative speed हम जाई परिबा. But distance is not given. तम distance जा भी पकई परिबो, distance D नहीं परिबो. तो better आप LCM नहीं होची. First hour time मा कर दियो. तो first time नहीं ची 6 am ରୁ 2 pm 6 am ରୁ 6 pm 12 घंटा हितांता. तो that is 4 घंटा पूर्वरु 5 6 ताले 8 घंटा नहीं ताले 8 hours. Similarly 8 am ରୁ 3 pm 8 am ରୁ 8 pm 12 घंटा हितांता. तो 5 घंटा कम नहीं ची. तो that is 12 minus 5 7. एटा 7 hour नहीं ची. ताले फर्स्ट पर्सन नीचे 8 hour to reach, सेकंड पर्सन नीचे 7 hour to reach. दिला एलसीएम नहीं गली. तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू 856 किलोमीटर. ताले स्पीड ऑफ फर्स्ट वन S1 इक्वल टू 56 by 8 7 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन S2 that is equal to 56 by 7 8 किलोमीटर पर आवर. पहला रेस्पेक्टिव स्पीड्स डिस्टेंस है 56 किलोमीटर, स्पीड है 7 और 8 सॉरी. छप्पन बाय 7 ये अब 8 राइट 8 किलोमीटर ठीक तरह. ताले S2 है 8 किलोमीटर पर आवर, S1 7 किलोमीटर पर आवर. नाउ क्वेश्चन इज टाइमिंग समान करे पड़िबो. टाइमिंग अलग अलग अछि. तो P बाहर 6 am रे, Q बाहर 8 am रे. सो 2 घंटा P ट्रैवल करची. सो एट द रेट ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर 2 घंटा मन एठी आसी पहुंच जाईची. तो ये जो केते घंटा केते किलोमीटर जाइतो 14 किलोमीटर जाइतो. तो रिमेनिंग डिस्टेंस केता हो एटा 56 minus 14 56 minus 14 16 चले गला 2 5 गला 4 42. ताले टाइम टू मीट टाइम टू कैच डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड एती कैलकुलेशन. डिस्टेंस है 42 by 8 7 15 आवर.
So that is equal to 15 दूनी 30, 2 होल 12 by 15, 3 कर दियो 312, 3 पंचा 15 तक मिनटी कर दियो 60 रे कर दियो 12 पंचा 60 48 मिनट तो 2 hour 48 minutes from कुडो ना 8 am एटा 8 बजे 8 am तले 8 am plus 8 am so they will meet at exactly 10 hour 10:48 am option C. So this is that is relative speed concept बहुत easy अच्छी तुम distance नहीं जबा that is LCM then find तुम जहाँ भी नहीं परिवो D नहीं परिवो X नहीं परिवो 100 नहीं परिवो मुझे एक 56 so that integral आसीवो तो calculation fast हो next question number 17. A farmer traveled a distance of 61 km in 9 hours. He traveled partly on foot and at the rate of 4 km per hour and partly on bicycle at the rate of 9 km per hour. The distance traveled on the foot is. A question को हमें टाइम शिफ्ट डिस्टेंस रे करि परिबा बड़ बेटर हबो दैट इज मिक्सचर एलिगेशन पकेबा ताले फार्मर ट्रैवल्ड डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर 9 आवर्स टोटल जाइछि 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स ताले एवरेज स्पीड हबो एवरेज स्पीड जोरा मझिरे पकेबा हमें that is equal to 61 by 9 kilometer per hour and he traveled partly at foot some foot jaiji some part and remaining bicycle and foot jaiji 4 kilometer per hour bicycle jaiji 9 kilometer per hour and average speed कर दियो लिखा है average speed 61 by 9 kilometer per hour सो 9 रे मल्टीप्लाई कर दियो इंटू 9 कर दियो इंटू 9 कर दियो इंटू 9 कर पहले इंटीग्रल आसी जीवो 9 9 कटि गला इला 936 तो 61 माइनस 36 61 माइनस 36 11 6 गले 5 5 3 गला 2 25 एपटे गला 9 9 81 81 माइनस 61 0 दैट इज 20 तो रेशियो कोन बताले 5 20 5 5 25 ये जहां पायलट टाइम इज द टाइम रेशियो दैट मींस 4:5 वाला टाइम रेशियो फुट रे जाइछि 4 पार्ट टाइम एंड दैट इज 5 पार्ट जाइछि बाइसाइकिल जाइछि 5 पार्ट टाइम टोटल टाइम नीचे 9 घंटा तल 9 पार्ट जदि 9 आवर्स 1 पार्ट इज 1 आवर तो एटा 5 घंटा ट्रैवल करछि एटा 4 आवर ट्रैवल करछि सो डिस्टेंस बाय फुट पचरछि तो डिस्टेंस केन पाइबा ना इनिशियल स्पीड फुट रो स्पीड को मल्टीप्लाई करबा ता टाइम रे तो डिस्टेंस वाला स्पीड इनटू टाइम तो स्पीड वाला 4 इनटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 16 किलोमीटर तो 16 किलोमीटर ऑन फुट जाइछि दैट्स ऑप्शन इज बी बाइसाइकिल भाग दे परिबा 9 इनटू 5 45 किलोमीटर जाइछि बाय बाइसाइकिल सो टोटल डिस्टेंस वाला दैट्स व्हाई 61 किलोमीटर सो दिस इज द दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स फॉर दिस मिक्सचर एलिगेशन बहुत सहज हबो इन दिस टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चंस Next question is question number 18. Four boys and 2 girls are to be seated in a row in such a way that the 2 girls are always together. In how many different ways can they be seated? Permutation questions. So 4 boys and 2 girls will be sit together so that girls will together so 2 girls जोटी बसिबे काटी बसिबे तमना को 1 ब्लॉक नै जीवो टुगेदरनेस लॉजिक तो 4 persons plus 1 person बेसिकली 5 persons तो 5 person will sit first 5 factorial ways into 2 girls can exchange their seats among themselves 2 factorial ways तो आंसर जीवो 120 into 2 the answer is coming 240 that's the option is coming D. Logic of togetherness जे बसिबे काटी तक नै जेबा जे 1 block 1 person 1 unit तो 4 boys plus 1 person 5 persons तो 5 person बसिबे 5 factorial because 5 person can exchange their seats among themselves in 5 factorial ways and 2 girls जोटी बसिबे ताके भीतर दीटा सीट थियो that is they can exchange their seats in 2 factorial ways the answer is coming 240 next question number 19
3 dice are rolled, the number of possible outcomes in which at least one dice is 5 shows. 3टा dice अच्छी माने हम जानते हैं total sample space, total number of weights of 216, total weights equal to 6 ର cube 216. And question goes, number of possible outcomes in which at least one dice is 5. One die out of 3, one dice is 5. तामाने कोन हबो वन डाइस एटलिस्ट यदि 5 अछि एटा एटलिस्ट अछि एटलिस्ट तामाने गोटे डाइस रे 5 ही पारे दीटा डाइस ही पारे तीनटा भी तीनटा को 5 ही पारे सो तीनटा केस ही पारे तो 1 5 ही पारिबो 2 2 5 ही पारिबो 3 5 ही पारिबो तो हम जब देखिबा जदि नो 5 को माइनस करिबा तला हम एटलिस्ट 1 पाइबा तो शॉर्टकट पकाओ एटलिस्ट 1 5 that is equal to at least 1 5 करो at least 1 5 total weights minus no 5 total weight बात करी 216 216 minus no 5 5 आसीबनी ता माने गोटे प्लेस आसीबनी टोटल 6 टा केसेस आसी 1 2 3 1 2 6 जदि गोटे 5 आसीबनी तले ये 5 प्रकार ही परिबो ए भी 5 प्रकार ए 5 प्रकार ही परिबो तो 5 into 5 into 5 that is 125 weights so 216 minus 125 तो 6 minus 5 is 1 11 minus 12 are 91 so total 91 weights that's why option is D तो at least 1 5 को हमें शॉर्टकट करि परिबा एटलिस्ट 1 5 दैट इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नो 5 कौन सी केसेस रे 5 आसीबनी तो यदि फर्स्ट केस रे 5 आसीबनी ताले आउट ऑफ टोटल फेसेस 6 तो 6 रु जे कौन सी 5 फेसेस आसीबो एक्सेप्ट दैट इज 5 तेनो फर्स्ट केस इज 5 सेकंड केस इज 5 थर्ड केस इज 5 मल्टीप्लाई करिबा तो 216 माइनस 125 तो ऑप्शन इज 91 राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 Question number 20 says the diagonals of two squares are in the ratio 3:7. So what is the ratio of their areas? Diagonals of two squares ratio is 3:7. तो diagonal दिए जी d1 by d2 जा radius भी से तो d1 by d2 that is 3/7 that is same as radius r1 by r2. तो ratio of the areas square areas हम जान से बात r1 कहि परिबा a करि परिबा बेटर होबा a कर दियो साइड रेशियो a1 by a2 डायगोनल रेशियो जहां साइड रेशियो से फर्स्ट दैट इज स्क्वायर रो साइड वाला 3 पार्ट सेकंड स्क्वायर रो साइड वाला 7 पार्ट तो रेशियो ऑफ द एरियाज पचरची तो एरिया वाला a1 स्क्वायर by a2 स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 9 is to 49 तो ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन तो डायगोनल स्क्वायर इज सेम एज द साइड स्क्वायर तो वन वेरिएबल उस रेशियो समान हो तो रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर्स दैट इज एरिया तो 9 is to 49 so this is the answer for this so इथला वेरियस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस पुलिस एसआई सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो ऑब्जर्व करिवो एंड प्रैक्टिस करिवो सो दैट क्वेश्चंस इजीली कैन सॉल्व करिपर विदाउट कांसेप्ट एंड रेशियो विल बी इजी so thank you all of you